Hello everybody. I welcome you all in this very interesting video. If we go to the nature, we can find mathematics everywhere. We see different patterns of flowers. Isn't it amazing how it is? And how much symmetry is there over there? And in plants, there is a lot of symmetry. Even if we go to the vegetables, different and beautiful shapes, and fruits again, the very different and interesting and very beautiful shapes. And within that beautiful shapes also, if we try to find out mathematics, really it is fascinating. So today I'm going to show you mathematics with the help of this, a god. This is a god. So although the shape of this god is cylindrical, we can understand it cylindrical. But if we try to find out mathematics again in this, you will see there is a lot of mathematics. So let's get started. Okay, see, this is a god. ये मैंने कट कर लिया है. I want to see this 6 centimeter. I'm going to measure so that ये लौकी का diameter मेरा है ही इतना ही. 6 it is. 6 I am taking. 6 is the diameter and 6 I will take the height. See, this face, this surface of this god is what? This is circular. Alright, this is a circle. And this is a circle, this is a cylinder. Okay, so what I'm doing, I'm going to cut out it. ये 6 centimeter था, 6 मैं यहाँ से भी लेती हूँ. This is 6, so that height and diameter will be same. So it will be called, if this radius and diameter I'm going to take, so that it will be a unit cylinder. Okay, I'm going to take it 1. 2r is equal to, I'm going to take 1. See this one. Okay, this now, this is a god. ये 6 centimeter exactly 6 है और इसकी ये diameter भी 6 हो गई. This is a unit diameter. See what I do with this. ये surface इसका cylinder है, ये surface is circular. We can find out its area, and we can find out the curved surface area. We know that curved surface area of this face, for mathematics, to teach mathematics, area of its face is what? Pi r square. Area of a circle is pi r square, and area curved surface area, if I write CSA, if I write curved surface area, this is 2 pi r h, and r and h are same. 2r is equal to h, that I have taken because मेरे पास जो ये गॉड का शेप है ये इसी शेप का है, इससे बड़े साइज आई डिड नॉट गेट. सो 2r is equal to h, एंड ये h मेरे पास 6 है और 2r भी 6 है. सो आई एम गोइंग टू टेक इट एज यूनिट 6 centimeter. 6 centimeter is equal to 1 unit I will take. Alright, this I will take 1 unit. So this has become a unit cylinder. Alright, unit cylinder. So what is its surface area? And if I take it 1, then 2r is 1. 2r is equal to 1. H is equal to also 1. So CSA, curved surface area, will be how much? 1. 1 into pi. This has become pi. And if I want to find out half curved surface area, half curved surface area will be pi half. Now to find this half, what I do, see, look here, what I do, if I cut it right from this portion, right from this position, this one to this one, I want to cut it exact half. I want to make, I am doing a correct half. थोड़ा सा ढंग से काटना पड़ेगा मुझे ये, so that yes I will go to the end, बिल्कुल end तक जाए और ये कटे नहीं. Yes, this one. Now exactly 2 shapes and both are symmetric. See, these two are symmetric shapes. So each will have curved surface area pi half. This one half is this, half is this. This is the curved surface area. This will be half pi half. Now see what I do, and this shape is
थोड़ा सा मुझसे कटने में प्रॉब्लम हुई. आई एम नॉट गोइंग टू कट आउट दिस बिकॉज माई अदर शेप्स will get in some problem, so I'm not going to cut out it. I'm not going to disturb this. This is ellipse. This shape is ellipse. If ये थोड़ा सा यहाँ पर कटने में प्रॉब्लम हुई, otherwise you will see this shape is ellipse. This is ellipse and here are two exactly half curved surface. Here see this is full and अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो it is half curved surface area इधर आ गया, half curved surface area इधर आ गया. Now what I do, I'm going to peel out it. See, if I peel out it, I have to peel it very very properly. If I peel out it, see, if I peel out it, this peel I want, okay, this peel थोड़ा सा improper हो जा रहा है. This peel, okay, this peel, if I peel out this properly, so that I don't want to waste it, okay, otherwise it will not give me the shape. मुझे फिर से यहाँ से peel करना पड़ेगा because I want to trace it. All right, I will trace out it. Just now I'm going to trace out it. See, look here, I will trace out it. इसको थोड़ा सा shape में इसका यहाँ पर अंदर से इसको कट कर देती हूँ so that it will be convenient for me to, and I have not missed any of the shapes. See, look here, मैंने कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं किया है. एंड सी, दिस इज अ ग्राफ शीट. इस ग्राफ शीट में अगर मैं इसमें क्या करूँ, 6 सेंटीमीटर का 1 यूनिट इफ आई मेक, ओके, इफ आई मेक 1 यूनिट ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, this one, see, look here, this one, I'm going to draw the graph, this one and this one. What I'm doing, I'm making 1 unit of 6, 1 2 3 4 5 6 and this should be 6. See, look here, 6 सेंटीमीटर का मैं 1 यूनिट एग्जैक्टली यहाँ पर ही मेरा 6 आता है. देखो, ये मेरा 6 आता है, ये मेरा 6 आता है करीब करीब. एंड 12 सेंटीमीटर के यहाँ पर हाउ मेनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स यहाँ पर 12 सेंटीमीटर में हो जाएंगे. दिस इज 12 सेंटीमीटर. सी, नाउ व्हाट आई डू, अब मैं अगर इसको इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ, ये 0 0 से ज्वाइन करती हूँ. सो दिस वन, ये जो है मेरा पूरा एरिया यहाँ से ले लेता है. ऑलराइट, ये 12 तक आ गया, ये मेरा 12 सेंटीमीटर तक आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ गया. दिस इज 12 सेंटीमीटर. सी, दिस इज अ साइन कर्व. ये एग्जैक्टली साइन कर्व है. रीजन ये यहाँ तक ही जाना चाहिए था, थोड़ा सा मेरा कट में प्रॉब्लम हुई थी. अदरवाइज विल सी, अगर ये प्रॉपर कटेगा तो दिस विल गिव यू ये हाइट 1, क्योंकि ये जो साइन फंक्शन होता है दिस इज 0 to पाई. रीजन पाई क्यों है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ये ऐसे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, सो दैट दिस होल विल बी पाई, देन 0 to पाई इट इज. एंड विच कर्व, this is a sine wave. So if I want to find its area, 0 to pi sine x, if I write 0 to pi sine x dx, this is how much, minus cos x and 0 to pi. Okay, I will get it 2 square units. This is 2 square units. So see, where is pi gone? Very amazing. This area, this is the area under the curve. I'm using integration for this. So what is this? This is 2 square unit. Just now what did I get? I got pi half. मुझे इसी का एरिया पाई हाफ मिला था. यही था वो जो मैंने पील आउट किया. इसी का एरिया मुझे पाई हाफ मिला था. और अब इसी का एरिया व्हाट डिड आई गेट? सो इजंट इट अमेजिंग? दिस इज नेसेसरी, दिस इज फैसिनेटिंग, क्योंकि वही एरिया को अगर हम इससे फाइंड आउट करते हैं तो ये मिलता है. बिकॉज दिस इज अ साइन कर्व. ये साइन कर्व था और ये पहले किसी चीज का सरफेस बना हुआ था, इसलिए ये चेंज इसमें आया हुआ है. एंड सी व्हाट मोर आई कैन डू विद दिस. इसके साथ मैं कुछ और भी कर सकती हूँ. अगर अगेन आई मेक द सेम थिंग, मैं उसका फिर से कट करूँ. ये 6 सेंटीमीटर का, इज इट 6? लेट मी सी. यहाँ तो 6 है लेकिन ये थोड़ा सा कम हो जा रहा है 6 से. सी व्हाट हैपन्स, मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ. मैंने 5x5 का कट कर दिया अब ये. सो अगर इसको देखो, ये यूनिट है, सपोज ये यूनिट है अभी, तो इफ़ आई पील आउट दिस, अगर मैं इसको बिल्कुल काट देती हूँ, बहुत छोटा सा काटती हूँ, तो ये सी लुक हियर,
ये क्या शेप देता है मुझे, I'll show you. ये कौन सा शेप देता है, ये देगा मुझे what shape, do you know which shape will be this? This will be a right, this will be a square. देखो ये एक स्क्वायर बन गया. स्क्वायर क्यों बनाइए, अब ये स्क्वायर क्यों है, कैन एनीबडी टेल मी? बिकॉज दिस वन, ये 2r था, 2r इज इक्वल टू मैंने h लिया था, और वो भी हाउ मच, 1 यूनिट. यूनिट मैंने 6 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बनाया. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? इस स्क्वायर का एरिया 1 इंटू 1 1 आ जाता है. तो सो मेनी डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एरिया वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ दिस कोड. इस लॉकी से जो है बहुत सारे शेप्स, साइज एंड these many things we can get. We can do many more things. हम इसमें से रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं, सी इलिप्स का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन अदर गॉड्स एंड वन मोर थिंग आई कैन टेल यू, ये जो लॉकी होती है, it gives amazing kind of that mandala painting, that also I am going to show you. And one more very very amazing thing I want to show you what kind of art it is giving. What I will do, suppose see I take this again. I'm going to take this again. This is very fresh. See, we can see here also so many spots here. And if I take out these seeds, these are the pieces of the places where seeds are there. If I take out properly these seeds and this white part, see this white part also I am going to trace it. I want to take out it. If I want to take out it, this white part, and if I want only green part, see this way I want only green part, and this is again a seed. This is a seed part I am taking out. Here it is also a seed. This one I am taking out, right? So this one this way, and this also. This is only white part. This is only white part, and here are the drops, some signs, because this god is fresh. I have taken a fresh god. See, look here. This way I can do. All these places I am going to point out. All these, you see, very strange. All these are in equal distances and very very near to the circumference. So what can I see? What can I see here? Here, amazing, very strange. It is a mandala pattern. I'll just show you. I'm going to color it. इसमें कलर करेंगे तो I can show you very very amazing mandala pattern. It is mandala pattern. So many things we can see over here. I hope you have enjoyed this video, and I'm highly thankful to Manish sir. So I hope you will also use this for art integration in mathematics. Thank you for watching.